Guys, this video is about learning lesson. एक शाम, wife returns home and saying me that Ankur, I've talked to a painter. He's going to come tomorrow and start painting. I said fine. So the day comes. Next day comes. The painter comes in. Wife is there. They would decide about the amount that is to be paid. He saw the place. He quoted an amount. Wife's always there to bargain and bring down the amount. So she did that. An amount was decided. Next day, the painter came in with his 4 workers and told his worker कि आप घसना चालू कर दो and gave them some glass paper or something for scrubbing the wall, and all those 4 people started scrubbing the wall. And this guy comes to me and says कि साहब माल लाना है, कुछ आप पैसा दे दो, 8-10 हज़ार जो भी है. I told कि 10 हज़ार तो नहीं, 8 हज़ार आप ले लो. And he takes 8 हज़ार and says कि पैसा निकाल के रखना लगेगा. So saying that he goes to get his माल. So anyways, these people are scrubbing and scrub करते करते it's 11:30, 12:30, 1 o'clock. They are very sharp about their lunch time. So खाने बैठ गए, खा के they are also very much interested in their power nap also done. ये सब होते होते टाइम हुआ 2:30. ना जैसे ही 2:30 हुआ, these guys are asking me कि सर अभी तक वो आए नहीं. And I told them कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कि अभी तक नहीं आए? आपको मालूम होना चाहिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आए. आप तो उनके आदमी हो. इंस्टेंटली दिस गाइस से हम कोई उनके आदमी नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, रास्ते पे खड़े रहते हैं. इन्होंने बुलाया कि आज एक घर में पेंट करना है, आ जाओ. हम आ गए और उन्होंने कुछ पैसा वैसा भी नहीं दिया. हम लोग काम करने के बाद पैसा लेते हैं. सो आई वाज स्टन्ड. आई अंडरस्टूड मोटिव ऑफ दिस पर्सन बट इट वाज टू लेट टू रियलाइज. एनीवेज वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर, 3 साढ़े 3. ही डिड नॉट रिटर्न. एंड देन दीज गाइज आर टेलिंग मी साहब कुछ तो पैसा दे दो ताकि एटलीस्ट हम रात को कुछ खा सके. आई फेल्ट पिटी. आई गिव देम मनी and they left, but this painter never returned. The mystery was like this, that wife was going to office and she took a break journey in between and she wanted to buy some medicine, so she bought medicine from one shop. In that shop she found this painter was painting grills. Now बहुत दया आ गया उन पे और पूछा कि अगर इनको मैं काम दूं, घर का पेंटिंग का जो काम है दूं तो थोड़ा पैसा मिलेगा उनको करके. ही शी आस्क्ड कि आप क्या पेंट करोगे. तो ही told obviously yes करेंगे. कहाँ पे है? Then she told that मेरे यहाँ पे है, but he was quite far away from that place, but still he accepted और everything was finalized there and he planned to come in. Okay, anyway, this was the mystery. Now what happens is, after few days wife again happens to visit that place and that medical shop. She ladies won't leave, right? So she visits that मेडिकल शॉप एंड आज दैट गाय यहाँ पे वो पेंट कर रहे थे. मेडिकल शॉप वाला से वो तो वैसे ही एक आदमी था कि कुछ करना था, थोड़ा पेंट करके चले गया. वो हम भी नहीं पहचानते. सो प्लीज बी केयरफुल वेन एवर यू आर शेयरिंग आउट सम मनी टू दीज सॉर्ट ऑफ पीपल. बी केयरफुल, राइट?